Hi, this is Drashti from Meta Intro. I'm community manager there, and today with me I have Jenil from Coinvise. Welcome, Jenil. Thank you for having me. तो कॉलेज में थे तब आपकी फेवरेट जगह Right. कौन सी थी जहाँ पे बैठ के आप पेपर्स या ये सब की रिसर्च करते या आप सिर्फ बैठ के गप्पे मारते थे? हमारा कॉलेज में एक जिनको भी ये जॉब मिलती थी उनको एक स्पेशली लैब मिलता था। तो वो लैब का लाइक वो था कि इट वाज लॉक्ड। सो यू इफ यू कैन ओनली गेट इनसाइड इफ यू हैव अ कोड, एंड वो कोड सिर्फ लाइक सिलेक्ट लोगों को देते थे। तो वहाँ पे आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माय टाइम। लाइक हमने उधर प्रोजेक्टर भी था उधर, सब काइंड ऑफ देयर वाज अ सुपर कंप्यूटर भी था उधर। uh, उधर लाइक पैंट्री भी था। it was a huge lab, and we had it for ourselves. So उधर हमने लाइक रिसर्च भी किया है, मूवीज भी देखा है उधर, हमने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड भी किया है। एंड उधर से ही हमको लाइक वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम देयर, सो इट वाज गुड। आसम, वो सुपर पावर जैसी फीलिंग आती है कि किसी के पास कोड नहीं है, सिर्फ मेरे पास है एंड आई एग्जैक्टली गो एंड एग्जैक्टली। बी देयर। या या आज ऐसा इमेजिन करते हैं कि आज उसी लैब में बैठ के हम भी बात कर रहे हैं। 100%। Yeah, actually, I'm super excited to talk because जेनिल की कंपनी के बारे में पहले मैंने लास्ट ईयर एक इवेंट में जाना था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। So I wanted to start this with कि what is Coinvise and what is your vision with Coinvise? सो कॉइनवाइज हमने 3 साल पहले शुरू किया था। इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी स्टार्टेड वर्किंग विद क्रिएटर्स टू सेट अप their own token or own NFT and distribute them to their community. And now we're working with different communities. We're working with Web3 projects that have a community. We're working also with brands like Coindesk, and we're helping them distribute any kind of NFT badges, different ways to reward their community, and also find new people, onboard them for participating with them meaningfully. So we have like built a tool called campaigns where you can set it up for free. We've set it pretty permissionless, so anybody can go to our website और वो कोई भी campaign create कर सकते हैं where they can upload an NFT or upload an image. We'll create the NFTs for you, and वो आप distribute कर सकते हो for people to participate with you. So participate meaning कि अगर वो आपको ट्विटर में फॉलो करते हैं, अब अगर वो आपको सब्सक्राइब करते हैं, अगर वो आपके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं, ऐसी सब एक्शंस करने के लिए आप सेटअप कर सकते हो कैंपेन्स। एंड वी सीन गुड प्रोग्रेस विद दैट, सो दैट्स व्हाट वी डू। So, जेनिल, is it similar to social media in Web 2 जो आप कर रहे हैं? Like content creators और content का उन पे पूरा right है? Is it similar to that? 100%। तो सोशल मीडिया में जैसे कोई भी हम्म क्रिएटर कोई भी टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकता है, उसको हम्म अगर कोई एंगेज करता है उसके साथ, या फिर उसको अगर आप लेंस प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो अगर आप कोई कलेक्ट करता है आपका कंटेंट, या फिर कोई आपका कंटेंट ओन करना चाहता है, वो सब चीज़ें आप इंसेंटिवाइज कर सकते हो। तो इसीलिए हम क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं। उसका एक गुड एग्जांपल है कि हम एक न्यूज़लेटर के साथ काम करते हैं वेयर दे वांट पीपल टू कलेक्ट देयर न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिरर, और दे वांट पीपल टू सब्सक्राइब, सो वो इंसेंटिवाइज कर सकते हैं यूजर्स को। सो या इट्स वेरी क्लोजली लिंक्ड। Yeah. Yeah, it is like much better and a greater vision compared to what we are using right now. So, Janil, सबसे पहले आपको Web3 के लिए किसने इंस्पायर किया? कैसे इंस्पायर हुए? Can you share a bit about your personal background as well? श्योर। सो मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था एज अ रिसर्च असिस्टेंट। जो कैंपस में ऑन कैंपस अलग अलग जॉब्स होती हैं, एंड उसमें मैंने अप्लाई किया था। एंड उसमें रिसर्च असिस्टेंट यूजुअली आप एक प्रोफेसर के साथ काम करते हो। सो वो प्रोफेसर ने फिर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर। शी वाज वर्किंग ऑन सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन में, स्पेसिफिकली माइनिंग पूल सिक्योरिटी के ऊपर। सो वी वर्कड ऑन
थ्री पेपर्स, तीनों तीन हमने मैंने 3 साल काम किया, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, एंड बाय द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन हमने 3 पेपर्स पब्लिश किए इन accredited conferences, IEEE, एंड उसके बाद मैंने जॉब भी की as an engineer, and then after like 4 or 5 years, I got into building my own company. But through that job, I got into Web3. So, Jenil, when you started Coinvise, आपका विजन क्या था कॉइनवाइज को लेकर, और ओवर द टाइम ये 3 साल में कॉइनवाइज का विजन कैसे इवॉल्व होता है? So हमारा like overall vision इधर से शुरू हुआ था कि धीरे धीरे बहुत सारे लाइक काफी लोग आर नाउ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन. सो आपका जो डिजिटल लाइफ है दैट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल लाइफ. एंड उसी लाइक सॉर्ट ऑफ विजन के ऊपर वी सॉ दैट अगर डिजिटली ही आपको कोई लाइक वैल्यूएबल चीजें ओन करनी हो, तो डिजिटल करेंसी इज अ रियली गुड यूज केस. हम अभी ज्यादा इंडिया में भी हम ज्यादा यूपीआई यूज करते हैं, वेंडर्स भी यूपीआई यूज करते हैं, तो इवन मेन स्ट्रीम जो ऑडियंस है वो भी ज्यादा डिजिटली इंटरेक्ट करती है, इवन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो पहले तो हमारा सिर्फ सोशल मीडिया था, बट नाउ हमारे जो डिजिटल करेंसी है, then we saw use cases where your like entire job, जैसे आप अगर जॉब ढूंढते हो तो पहले लिंक्डइन पे लोग ढूंढते हैं जॉब. इवन राइट नाउ दैट इज द केस फॉर सम पीपल, बट अभी ज्यादा लोग ट्विटर पे दे ऑलमोस्ट ट्रीट their प्रोफाइल लाइक अ रेज्यूमे, एंड उधर पीपल कनेक्ट. इन्वेस्टर्स को पिच करना आपका स्टार्टअप, अगर आपको नए यूजर्स फाइंड करने हो, अगर आपको कम्युनिटी मेंबर्स फाइंड करने हो, अगर आपको आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो, ये सारी जो चीजें हैं, वो सारी देर नाउ पॉसिबल ऑनलाइन. सो हमारा बेट इनिशियली ये था कि एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन, आपका जो डिजिटल सेल्फ होगा, आपकी जो डिजिटल चीजें होगी, वो सब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ब्लॉकचेन वाज अ वेरी good way to showcase cryptographically secure items that you can own, and that can be art, that can be anything. It could be content, it could be media, and ये हम sort of ट्रेंड बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि जैसे पहले राजा सब लाइक किंग्स होते थे, they used to adopt as a art, and they used to adopt these new forms, and then it used to like sort of translate to the mainstream audience. Similar thing with countries जब adopt करती थी तब it used to translate. So we're seeing a similar pattern where अगर आप कोई जैसे valuable चीज है इन फिजिकल लाइव्स, अगर मुझे आपको अहमदाबाद से जैसे न्यूयॉर्क भेजना हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट ऑनलाइन दीज थिंग्स बिकम वेरी ट्रिवियल एंड वेरी इजी टू डू. इन इंस्टेंटली आपको ट्रांसफर कर दिया, यू विल फॉर श्योर गेट दैट ट्रांसफर. तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज थे वो ब्लॉकचेन यूनिकली प्रोवाइड करता था कि आप स्कैरसिटी क्रिएट कर सकते हो, आप वैल्यू अट्रीब्यूट कर सकते हो कोई भी आइटम को. तो वो हमारा बेट था. अभी उसमें उस टाइम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था वेयर ये जो कम्युनिटीज ऑनलाइन है, जो बहुत टाइम से है, स्टैक ओवरफ्लो है, हैकर न्यूज है, ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज बहुत सारी है. उनमें हाउ कैन वी यू एड इंसेंटिव्स टू एग्जिस्टिंग एक्शंस. तो एक मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ. जैसे रेडिट है, रेडिट इज द बेस्ट प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, एनी काइंड ऑफ नीश यस। कम्युनिटी ऑल्सो. और उसमें भी पॉइंट्स होते हैं कि उसमें अगर आपने अच्छा कोई कमेंट किया, उसमें अगर आप मॉडरेटर बने, उसका लाइक एवरी कम्युनिटी का एक अपना ही छोटा सा रेडिट के अंदर इकोनॉमी है, जिसमें पीपल आर रियली एक्टिव एंड रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. तो वैसा अगर हमें क्रिएट करना हो तो हाउ कैन वी डू इट. सो दैट वाज द इनिशियल आइडिया, एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग कॉइनवाइज वेयर any community can create a token or create an NFT. अगर tokens legally या कोई और reason से they're not adding any value, and uh, उसके as an option में you can create NFTs and you can distribute them for people to complete useful actions. तो उसके ऊपर से हमने एक tool बनाया था where you can create mint a token, distribute it, and उसको अभी evolve करते 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 what we have the product right now, उधर हम पहुंचे. We are now deployed to a lot of different chains, and काफी communities use करती हैं, but that was the vision and it has definitely evolved, but the original idea was the same, that
our digital lives are going to be much more important than our physical lives. काफी इंटरेस्टिंग दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली Yeah. मैंने भी इतना डिटेल में कॉइनवाइज के विजन के बारे में जाना दो वी हैव मेट बिफोर दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सो जेनिल आपकी फाउंडर्स जर्नी में इस 3 साल में वो कैसी वो कौन सा एक इम्पॉर्टेंट लेसन था that you learned throughout and you think that it is going to remain with me forever? I think like uh, the number one thing is like try to figure out अपने users का क्या problem आप solve कर रहे हो. um, I think ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर if you're building any kind of software web 2 web 3 कोई भी हो, um, it is very easy to build something. uh, शुरुआत में ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, यू नीड अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स ये वो, बट बिल्डिंग इट इज सिंपल. और सॉफ्टवेयर कोई भी क्रिएट करना इज गेटिंग मोर एंड मोर सिंपल. अगर आप एज लॉन्ग एज अगर आप डीप टेक में नहीं हो, if you're creating an application, it's relatively easier to do, or at least achievable. It does take some time, but with the tools we have today, it's getting easier and easier. But building a strong distribution, user base, people that actually care about you, building a brand, actually people caring about you, is the most difficult thing. क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, everybody has a level playing field on the internet to get started, to market themselves. So your number one priority once you build something, or even while you're building it, is to build a very strong distribution of people that believe in you, believe in your product. And वो तभी ही believe करेंगे when you're solving a very crucial problem for them and they're emotionally attached to it. जैसे कोई भी आप अगर ब्रांड देख लो, you're emotionally either attached to it in the sense कि you're giving you some kind of status, it's giving you some kind of solving some kind of problem for you, it is saving some time for you, it is allowing to create you money, it is allowing you to find a date, it is figuring something out that is very difficult to do. So focusing and obsessing over it is very important. Building software is going to be easy, and your competitors will most definitely do it better. So that's something to focus a lot on. Okay, great. So, Janil, yours is a startup. So when you started your company, आपने शुरुआत की थी, of course, जब आपने hiring करना शुरू किया, तो what was the key characteristics or qualities आपने देखना शुरू किया कि अच्छा मैं इनके साथ अब काम करना चाहता हूँ और मुझे अपनी टीम बड़ी करनी है. So what is that one thing that you looked for? एक या notion है कि like competence is something that we have value the highest. तो अगर आप if you cannot compete, or if you're not a good like because अगर आप hiring करने जाते हो, there's lots of people that know the skill, but there's very few people who are actually competitive with it. So we Hmm. try to look for those people, and I've always believed in a small team, so हम हमेशा small team रखते हैं. And हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, we've like handpicked very smart people. And जो एक्चुअल में स्मार्ट लोग होते हैं, उनको उनका सिंगल बिगेस्ट मोटिवेशन होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एंड Hmm. यू कैन सी दैट इन डिफरेंट फॉर्म्स, कि जैसे अगर आप देखते हो तो वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं. देयर इज नो फाइनेंशियल motive behind doing these things, but वो फिर भी करते हैं. If you look at the Hmm. past projects they've done, they are not like just projects that anybody else does. Like जो होता है कि like college में जो सब projects कर रहे हैं वही projects करेंगे. There's no creativity or uniqueness to it. It's just boilerplate. So you can see that in their activity. उनका like your work is almost your personality. तो वो दिखता है कि like if it's the same like everybody else, or if it's genuinely unique and they're trying to stand out. तो वो सब चीजें बहुत matter करती हैं, and that helps you filter out the this is for true for any human being is authenticity is like how honest they are. So those kinds of things matter a lot. Awesome. If I ask you to name it in bullet, तो आप किस किस बुलेट के मतलब में दोगे प्रायोरिटाइज करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग competitiveness uniqueness or smart how do you bullet the characteristics what is first second third Yeah, so
Yeah, so first is going to be competence. Second is going to be like, willingness to learn. So काफी लोग आते हैं जो they're like entirely from a new background or they have no idea about Web 2, Web 3, sorry. So that is completely fine. Like at Coinvise, we've never like had anybody that is truly Web 3 native. They've always learned with us. So one is competitive. Second is willing to learn. So anybody that's willing to learn can pick it up easily, and then how creative or unique they are, and fourth one is like how honest they are with their work. तो Hmm. ये चार पांच चीजें देखते हैं. Awesome. So when you hire someone as a founder, आप कैसे ensure करते हो कि ये ही मेरे लिए right fit है? Because ये सारी skills, okay, एक person में है, but वो cultural fit है या नहीं? That also is a big decision to take. तो as a founder, ये आप कैसे ensure करते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर, बट हम कभी कभी वो करते हैं, माइक्रो इंटर्नशिप करते हैं, तो 1 वीक 2 वीक्स हमारे साथ वो काम करते हैं, दैट वी कैन कीप इट पेड, एंड दैट्स अ गुड वे टू आइडेंटिफाई कि अगर वो कल्चरल फिट है कि नहीं. ऑफन टाइम्स दे आर विलिंग टू डू इट, एंड काफी टाइम्स वो हमारे साथ वैसे ही लाइक 1 to 2 weeks टाइम स्पेंड करते हैं, हमारी टीम में काम करते हैं, एंड इफ दे एंजॉय इट दे कैन वी कैन मूव फॉरवर्ड. इफ दे डोंट देन usually you can tell right then and there if it's a culture fit or not. Hmm. One of the bullet points that I did not mention that is also very important is how they can manage themselves. अगर उनको थोड़ा स्पून Hmm. फीडिंग की या कोई मैनेजमेंट की जरूरत है, so that's very difficult to do. Most smart people can manage themselves, and वो एक जो स्किल है वो बहुत कम लोगों में होती है. So I think वो 1 to 2 weeks में you figure out whether it's a culture fit or not. Awesome. Yeah, this is very interesting point that how manage yourself or not वाला point. I really Yeah, liked it. yeah, So yeah. जेनिल, कोई भी इंडिविजुअल है जो अभी जॉब मार्केट में आ रहा है, उस इंडिविजुअल को कैसे अप्रोच करना चाहिए, लाइक हाउ दे शुड मार्केट देमसेल्व्स फ्रॉम द फाउंडर्स पर्सपेक्टिव, कि फाउंडर क्या देखते हैं जब कोई उनको लिखता है, तो व्हाट आर 3 4 थिंग्स दैट यू लुक फॉर? Yeah, so one of them is आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए. If it's a, you know, अगर आपको कोड करना आता है तो आई वुड स्ट्रांगली encourage कि आप एक वेबसाइट बनाइए अपना खुद का. अगर आपको कोड करना नहीं आता है, then I would say you can also use a Notion page for yourself, but uh, create a very good portfolio of yourself, क्योंकि उधर से we can understand कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करते हो, पोर्ट्रे करते हो. सो दैट इज ऑलवेज मच बेटर देन अ रेज्यूमे. हम एक्चुअली रेज्यूमे हमने एप्लीकेशन में भी लिखा है, प्लीज डोंट सेंड अस अ रेज्यूमे, वी वुड बी लाइक टू सी अ पोर्टफोलियो. तो आप अगर नए ओके. हो तो पोर्टफोलियो क्रिएट करिए. इफ यू आर इनटू, आई मीन दिस इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द रोल. अगर आप अगर जैसे इंजीनियरिंग के रोल में हो तो work on like projects that you're interested in. So that always goes the extra mile कि अगर आप कोई सिंपल टेम्पलेट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सो दैट डजंट स्पीक टू टू मच. बट अगर आपने कोई खुद की लाइब्रेरी लिखी हो, अगर आपने कोई खुद खुद का ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट बनाया दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू यू and unique to you, I think that also shows that your personality, and it like sets you apart. And yeah, I guess like uh, try to be as concise as possible. काफी लोग अपने पोर्टफोलियो या रेज्यूमे में बहुत कुछ लिख देते हैं, एंड वन ऑफ द थिंग्स, एटलीस्ट मैं भी जब जॉब्स में अप्लाई करता था तो मेरे प्रोफेसर्स टीचर्स सब कहते थे, मेंटर्स कहते थे कि द मोर कंसाइज यू आर, the better. So the way you message somebody, the way you put information on your portfolio, if it's not clear and concise, um, nobody's gonna even read all of it. So this is even true for pitch decks. हम कंपनी के लिए जब pitch decks create करते हैं investors के लिए, if it's not concise, like they won't even look through the whole thing. So Hmm. clear communication in a very concise way is a very underrated skill. ऑसम, दिस इज अ ग्रेट एडवाइस एक्चुअली. और आपने बताया कि
एक तो लंबा Yeah. लंबा नहीं लिखना चाहिए when individuals are approaching founder हाँ. or anything. Yeah. Other than that, क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो it's a big red flag. I mean, I think that is the biggest, like, I think it's a very big red flag. अगर आप, you're not honest in your resume or because you can always tell कि it's very obvious that you're not good with it. But अगर आप लिख रहे हो ऐसा कि all of these skills, so uh, try to be as honest. अगर आपको आता है, that's well and good, but try to be as honest as possible about what you do, your background, and everything. Because people can always tell. Hmm. Yeah, I think what Jenil as a founder looks the most is the honesty. आपके सारे question answers में वो दिखा that this is something I look for, and I think many founders would want that आप ही की तरह कि वो लोग 100%. honest रहे अपनी application में. Great. I think Exactly. Jenil, I'm keeping it short and simple for you, so I have quick rapid fire for you, and you have to Okay. also keep it fun. Okay. Okay. Okay, so this is the first, and you have to answer rapidly. If you could invite three people, Okay. living or dead, from the Web3 space to a decentralized dinner party, who would be they and why? Uh, I think I would invite, like, obviously Vitalik because I've never met him and I would like to meet him. I think he's a very influential person and obviously added a lot of value. Uh, if we figure out who it is, Satoshi Nakamoto, I think that would be a very good person. And मेरे जो खुद के जो ब्लॉकचेन के प्रोफेसर थे, थॉमस ऑस्टिन, बिकॉज मुझे जितना भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्रिप्टो के बारे में जिसने सिखाया है, it is that professor. So I think he would be on my side, helping me understand concepts and asking good questions. So all three, yeah, these three. Great. मैंने अभी जितने भी लोगों से बात की, everybody is like, if we figure out Satoshi कौन है, we would want to meet them Yeah, because most of people are actually in this space because of him. right, exactly. Hmm. Okay, so it's just fun that if कोई historical figure है हमारे past में, उनमें से अगर किसी को लाके आपको वेब थ्री समझाना हो, यू बिलीव दैट ये इंसान वेब थ्री उसे पता होता तो बहुत कुछ करता, हु वुड बी दैट पर्सन? I think there's actually so many, but if I had to go back, I think Steve Jobs, because I can, एक ट्वीट हम्म. था नवल ने लिखा था कि अगर today's date में कोई होता, like Steve Jobs would have been in Web3. So I'm very curious what he would think about it and whether like this would be interesting to him. So yeah, I actually never thought like this way, but now when I'm thinking it, it's like, yeah, Steve Jobs could have done wonders with it. Okay, yeah. so if you have to pick celebrity as your Coinvise face, who would that celebrity be? I'm a big fan of Leonardo DiCaprio. I don't know like if he would be a good face in tech because he's never endorsed any. So but yeah, if I had to like hypothetically, it would be him. Oh, nice, great. I also like him. Yeah. Okay, lastly, what is that moment in your 3 years of journey? 3 years नहीं, आपकी startup journey या founders journey में, what is that one moment where you truly just took a deep breath and was satisfied कि okay, I did it. What is that moment that you realized? When we closed our first big user, it was like very brief, तो, but हमारा जो first big user था, it was CoinDesk. उनके साथ हमने contract sign किया था, and we got paid for it, and it was very good. So उस moment में we felt like, okay, this is very good. Awesome, awesome. I know there are many Yeah, such goosebumps moment you had in your journey और आगे भी बहुत आने वाले हैं. But yeah, yeah, it's good to know that your first is something you always remember. So I think that's it. That's all I wanted to know. 100%. Of course. I'll surely be pinging you again. Same. Thank you. Thank you so much.